हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले कुछ लेक्चर्स से कि वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्यों रिक्वायर्ड है, कैसे ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। बट तुम एक मेथड जानते हो ऐड और सबट्रैक्ट करने का, वो है ग्राफिकल मेथड। तो इस पिछला जो वर्कबुक था उसमें मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है। सो लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इसमें कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। वेक्टर होने के लिए क्या क्या जरूरी है? केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का होना, या इट शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा? इट मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। कैसे डिफाइन करोगे वेक्टर? सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। व्हेन आर टू वेक्टर सेड टू बी इक्वल? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वेक्टर? फ्री वेक्टर का मतलब क्या है? अ वेक्टर विच कैन बी redrawn, इसको redraw कर सकते हैं, redrawn from particular point या any point, it can be redrawn from any point। क्या सारा वेक्टर फ्री वेक्टर होता है? नहीं। कैन स्केलर भी नेगेटिव? क्या स्केलर, जैसे स्केलर का एग्जाम्पल टेम्परेचर है या नहीं? अब ये बताओ, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पे क्या टेम्परेचर होगा स्पेशली विंटर्स में, तो क्या वो प्लस में होगा या माइनस होगा? सो टेम्परेचर स्केलर है और टेम्परेचर क्या हो सकता है? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सप्लेन। मैग्नीट्यूड किससे रिलेटेड है? लेंथ से, जो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। Add given vectors using triangle law, parallelogram law and polygon law. So we have discussed that in class also. Previous lectures में भी ये डिस्कस किया हुआ है adding थ्री वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, और सबसे आसानी से किससे ऐड कर लेंगे? पॉलीगॉन लॉ से। क्वेश्चन 8, कैन वेक्टर्स बी एडेड लाइक स्केलर? नाउ एडेड लाइक, एडिंग लाइक स्केलर का मतलब क्या हुआ? स्केलर कैसे ऐड होता है? नंबर लाइन। और नंबर लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। और जब तुम वेक्टर, दो वेक्टर ऐड करते हो तो जनरली क्या शेप मिलता है? ट्रायंगल। लेकिन क्या वेक्टर भी स्ट्रेट लाइन में ऐड हो सकता है या स्केलर मेथड से ऐड हो सकता है? तो आंसर क्या है? यस। कब? एक केस जब वेक्टर कैसा होता है? पैरेलल। तो जब तुम ये दो वेक्टर ऐसा ड्रॉ करोगे ए एंड बी, तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। इट इज नॉट अ ट्रायंगल बट स्ट्रेट लाइन। और कोई केस, और कोई दूसरा केस संभव है? आंसर है फिर यस, अगर वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रायंगल लॉ से ये आया रिजल्टेंट। तो यहाँ भी क्या शेप मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ स्केलर टू वेक्टर? नो। जब भी वेक्टर है उसको वेक्टर से ही ऐड करेंगे और वेक्टर सेम टाइप का होना चाहिए। 10, can vector be subtracted using graphical method? Yes, because subtraction के क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में किस क्वेश्चन में बदल लेते हैं? a minus b is basically vector a plus minus of vector b. And what is significance of minus sign in front of a vector? Opposite direction. 11, define null vector. तो null vector का मैग्नीट्यूड कितना है? इसलिए ये वर्ड है नल। मैग्नीट्यूड इज 0। और डायरेक्शन पता है या इनडिटरमिनेट है? डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। और इनडिटरमिनेट वर्ड का मतलब क्या हुआ? नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स डायरेक्शन। क्वेश्चन 12, ड्यूरिंग अ रिले रेस रनर ए runs a certain distance due north and then hands off the baton to runner B who runs for the same distance in a direction south of east. The two displacement vectors A and B can be added together to give a resultant vector R. Which drawing correctly shows the resultant vector? So as we have to add two vector, we'll use triangle law. Now in triangle law, head and tail should coincide. So in option 1, vector A and this is vector B. So head and tail of A and B coincides, but resultant should be from tail of first vector to head of second. So this cannot be true.
Now in this case, resultant is from head of second to tail of first, so this is not possible. This is absolutely wrong. Look at this diagram. Head and tail coincides and resultant is from tail of first vector to head of second vector. So correct is this option. This is correct one. Question 13. The first drawing figure Q9. So this is figure for question 9. The three displacement vectors are A, B and C. This is vector A, this one is B, this one is C. And from polygon law, this is a resultant R. The resultant vector is labeled R. Which of following drawings show the correct resultant vector for A plus B minus C? Now we can interpret this as vector A plus vector B plus vector minus C. Minus C means magnitude will be same, but minus C will be opposite in the direction to vector C. We will use polygon law again. So first vector A, second vector redrawn from head of first, that should be B, but this is not B, so this cannot be the correct option. Look at this one. First vector A, then second vector B, and third vector redrawn from head of B is minus C. This is C. Minus C will be in this direction, and resultant will be from tail of first to head of last, or resultant will close the polygon. So option 2 is correct option. Question 14. The first drawing figure Q10, this is figure Q10, shows three displacement vectors A, B and C which are added in tail to head fashion, that is polygon law. The resultant vector is R. Which of following drawings show the correct resultant vector of A minus B minus C? So vector A remains same, minus B, we will redraw vector minus B from head of A, so minus B will be like this, and then minus C from head of minus B, so minus C will be in this direction. So you can easily figure out which one is correct option. So correct option is 3, because this is your vector A minus B redrawn from head of vector A, and then we need to redraw minus C. So this is minus C, this one is minus B, this is minus C. Resultant will close the polygon. So this is your resultant. So third is correct one. Next question, which figure shows A1 plus A2 plus A3 for vectors given in Q11? So this one is figure Q11. Now this question is a bit confusing in the sense relationship between A1 A3 is a bit difficult to figure out. So let me do one thing. If suppose I give you this information that A1 is greater than A3, I mean magnitude of A1 is greater than magnitude of A3. So when you will find resultant of A1 and A3, resultant will be like this, and then using parallelogram law you need to find resultant of these two, something like this. So in this case, if length of A1 is greater than length of A3, resultant will be like D. So to solve this question, we need to know what is the relationship between at least a vector A1 and A3, that is, I mean what is the relationship in magnitude of vector A1 and vector A3. Next question, given below in column 1 are relations between vector A, B and C, and column 2 are orientations of A, B and C in xy plane. Match the relation in column 1 to correct orientations in column 2. Let us focus on these figures. So in column 2 figure 1, can you write using triangle law, of course, vector A plus vector C is equal to vector B? Now which relation in column 1 corresponds to this? Is there any relationship A plus C equal to B, A plus C equal to B? So we need to rearrange this. Now we can write this as vector B minus vector A is equal to vector C, that is relationship C. So C corresponds to 1. Now figure 2, head and tail coincides, head and tail coincides, head and tail coincides using polygon law. This polygon is already closed, so vector A plus vector B plus vector C is a null vector. So relationship D corresponds to 2. Now figure 3, vector A, vector C, vector B. Let us start with vector C. This is first vector, B is redrawn from
head of first, and A is from tail of C to head of B. So we can easily write vector C plus vector B is equal to vector A. Now, is there any relationship corresponding to this? So we need to rearrange this. So we can write this as vector A minus vector C is equal to vector B. So vector A minus vector C is equal to B. That is, in column 1, that relationship is B. So B matches with 3. So obviously A will match with 4. But let us verify that. This is vector A. B is redrawn from head of A, and C is from tail of A to head of B. So this is nothing but vector A plus vector B is equal to vector C. So this is how you can match.